Partly certain. Another option for the consecutive or time, despite someone issued from 12th December 2024. PP writing the next date of reading, which was on 29th April 2025. Reviewed the period of time from 29th April 2025. And Commission order few favorable warrant of arrest. Yeah, you period from Commission of Central Municipal Corporation. Another municipal corporation. I am to be present on 24th July 2025. Despite the issue of regulatory warrant of arrest, FBI Commissioner Determined Municipal Corporation is sent. In the absence of water parties, the Commission hereby observed that number one, whether the available warrant of arrest which was over from 24th April 2025 to execute for Canada authorized out simple police station, government health, and master operation. 25 and to return the same on 24th July 2024, which is today. Second, the copy of the available warrant of arrest was served upon the Sri Vijay district for compliance, and the same copy was also served upon the Deputy Commissioner Hon'Ble district for information. Second, neither the PI was found up nor the officer in charge Chinku police station
Yes, return, return the available current of errors to produce the errand ERRN, current PIO today. And therefore, observing the above circumstances and conditions, the commitment held by other, number one, by the provisions of Section 25, Clause 5, right? Clause 5. Commission finds that the practice of the officer in charge into police station and the commissioner is another municipal corporation does not conform with the provisions or spirit of this act, and therefore the commissioner, the commission recommends to the Inspector General of Police to initiate disciplinary action against the officer in charge into police station as per the service rules of the person. Next, under the same provisions of section 25 plus 5, under the same provisions of section 25 plus 5, the Chief Secretary, Government of Arunachal Pradesh, is hereby ordered to initiate disciplinary action against the Commissioner, Itanagar Municipal Corporation for disobeying orders of the code of Arunachal Pradesh Information Commission. Next, the IG, IGP, IGP, who is
hereby order to return a copy or return a copy of the action taken against the officer in charge in the police station. Secondly, the Chief Secretary, Government of Arunachal Pradesh, is hereby ordered to return a copy of the action taken against the Commissioner, Itanagar Municipality Corporation. Then summons to them the villain to the students Shri Taram and Nangram Ganesh to be present in the next date of hearing without fail, failing which the appeal will be then determined as market. Come the view of this people and this strategy. Because the book Yeah. The information was simple this information. So this will be the parties, the appellants are Taram Kenji and Nangram Ganesh versus Commissioner of Itanagar Municipal Corporation. here on the behalf of municipal. We are on behalf of the municipal corporation. Yeah. Corporation. Yeah, you can be as So are you representing the commissioner or the appellant? yes, it is on the behalf of this commission. Commissioner, Yeah. AMC. Yes. You come here. So this is the third. See, you being a advocate knows that the court functions on time. So when call is given by the court for the hearing, you have to be here. So we presume that you are absent today also. So we have utilized this section 25 clause by wherein I have ordered the chief secretary to initiate disciplinary action against the commissioner INC. The provision is given to us that if we find that certain officer or public authority is not cooperating with the commission to exercise our duties, then it gives us the right to initiate for disciplinary action against that officer. He may be the chief secretary or whoever he may be, secretary to the government or India also. He should be on time. We have already noted down one of the orders. And the police report is my mistake. It's more than So here, so so now today we are policy to go home and get police get police. We go there in police, which we are security. it's not done. No, it's not. Yeah, the police report is my So who is your PIO? The name, do you know the name of the PIO? here can be Where is he? Who is PIO? Are you the PIO of INC? I You come here. No, you are the PA head. Who has sent you? executive engineer. He is not the, he is the commissioner. No, the case is, the appeal is against the commissioner, not the executive engineer. The commissioner IMC.
So you want to convince already what are they are seeking for right now? Yeah. See, do you have their Form A? The Form A of the applicants, do you have their Form A? Yeah. So they have addressed it to the Commissioner IMC, the PIO come Commissioner IMC. Now, how can an executive engineer be a commissioner? A commissioner is a government. Do you know that? An engineer is just a department. An executive engineer, a contractor of the government. He cannot be the government. He might be the chief engineer, but he's not the government. He's just a simple contractor under government. A secretary and a commissioner represents the government. They are the government. You know, you're saying you have been sent by the executive engineer. So whatever be, let us come to the form A. The appearance they have applied it to the PIO come commissioner IMC. And now you're saying you have been sent by the executive engineer who is just a contractor. They are wanting the information from the commissioner. Have the PIO written back to them that the information would be uh, furnished by the executive engineer IMC. Then the commissioner should at least write back to them that the information would be available in the office of the executive engineer. So those copies are also, do you have those copies? The letter to the applicants stating that the information that they have sought will be with the executive engineer. Do you have that letter from the commissioner? See, these are the rules that we have to follow for an advocate. You know the procedures of the court. The court cannot be going off haywire. No, there is a laid down procedure. When you apply something to the government writes back to you saying that the competent authority to furnish those information is the executive engineer or AE or JE or CE, whatever he may be. So there has to be a letter here. No, why verbally you cannot direct someone to go to a different officer and obtain the information. ये पहले बार हम ऐसा ये देख रहा है मेरा तो had you had the copy of the letter from the commissioner to the students stating that the information will be available with the executive engineer IMC, are we convinced? ऐसा लेटर भी तो नहीं है कुछ कमीशन अब तक जो from your client, no. Do you have a letter stating that the information will be with the executive engineer? I guess this is a plan. Yes. Yes. Um, uh, who is the commissioner IMC? Do you know the name of that person? Who has sent you to represent him? This relates to my solutions. Today he have an urgent matter on so this why he is sending me. Do you have the Wakalat Nama also with you? It's not about me. So without the Wakalat Nama, how can you even come to the court? This Indian league when we have So do you have any written from your senior that he has engaged you?
Any authorization letter from your senior? No. How can it be? So we are वही से ऑर्डर रहेगा तो नेक्स्ट डेट तो बता रहा हूँ मैंने तो tap करेंगे हम कर सकते हैं हाँ so we have ordered the chief secretary to initiate action against the commissioner IMC as well as I have ordered the LGP to initiate action against the officer in charge in police station for not arresting the commissioner IMC. So again, if they don't follow my orders, the right to hire an authority against the Secretary of Government of India. You just tell brief the executive engineer, ऐसे बताओ उनको executive engineer को कि आरटीआई का एक्ट में ये कहता है सेक्शन 6 क्लॉज 3 कि आईएमसी का कमिश्नर को आरटीआई इन लोगों ने एप्लीकेशन डाला है तो आईएमसी कमिश्नर आईएमसी के पास अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं होता है तो कमिश्नर आईएमसी जिस जिस ऑफिसर का अंदर में वो इंफॉर्मेशन होगा उसको पास ऑन कर देना है एक लेटर लिख के एप्लीकेंट्स को कि आपका जो इंफॉर्मेशन आपने जो मांगा है ये हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास में मिलेंगे एक लेटर and then he will again write the executive engineer along with the application of the applicants ये एप्लीकेशन आया है आप इसको देखिए वो कॉपी आईएमसी कमिश्नर देने से वो उसका रास्ता सफा हो जाता है ड्यूटी फिनिश दिए क्योंकि ऐसा भी कुछ नहीं है अभी आप बोल रहे कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इंफॉर्मेशन तो दिया है वेयर इज दैट लेटर फ्रॉम द कमिश्नर राइटिंग बैक टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अंडर सेक्शन 6 क्लॉज 3 कि आप फर्निश करो करके वो भी कॉपी नहीं है आपके पास में अभी हम चीफ सेक्रेटरी तो कोई कोई अड़के आप मारेगा बिना चीफ सेक्रेटरी आपको जवाब नहीं दे के कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आपके पास आ जाने से तो आप भी तो नहीं मानेगा ना there has to be a report that the chief secretary has written back to some other officer. ये उसका वो जो प्रोसीड्योर का एक स्टेप ब्लैंक रह जाता है तो you don't have the locus stand right to stand in the court even नेक्स्ट स्टेप को बता दो राजन ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ना समझ गया जो हम बोल रहा है एक लेकर आईएमसी का कमिश्नर से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ऑर्डर देना है कि ये इंफॉर्मेशन इसके पास में है एप्लीकेंट्स का फॉर्म ए भी दे रहा है आप एप्लीकेंट्स को इंफॉर्मेशन को दो क्योंकि वो कॉपी को एप्लीकेंट्स को देना है तब जाके एप्लीकेंट्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास आपके पास में जाएंगे दैट इज द प्रोसीजर अभी कुछ भी यहाँ प्रोसीजर ही नहीं है They're coming without any authorization from saying that you have come to represent the PIO. You being an advocate, you should know. एक वकालतनामा तो होता है at least you have to get certain authorization letter from your senior or from the executive engineer or from the IMC. ऐसा भी कुछ भी नहीं है अभी तो हवा में तो we cannot hear the case no you intimate the next step to them कौन मिलेंगे that the ये है पर्सनल असिस्टेंट ये पर्सनल असिस्टेंट टू इसका ये है पर्सनल असिस्टेंट टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आईएमसी ऐसा होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आईएमसी का नाम रखना present without any authorization letter in the court and so the order of the
report has been intimated within regarding the next phase of clearing harvest. Next phase of voting is from not clearing what? 4th November 2025. Yeah, good application. Yeah, 296 Yeah. guidance. आपके साइन करा 24 years around birthday. To the baby. Room movement. Yeah, just study. See the beauty for him. फीजिबिलिटी गुरुकुल में कौन सा जगह में बैठते हैं ऑफिस ऑफिस तो संगम संगम में उनका ऑफिस है वो वही बैठता है मैंने तो तमिलनाडु में ज्यादा कर शो देखा है काम होने से तो कुछ खबर मिला हुआ सर Pensarle to body hasta de que esto, mira, mira, pues con se dice nada. Y lo como se salta una ये तो ये आज का एक था ये भी ना पर एक देश को भेजे का बहुत पसंद है ये मामून वाला भाई पर मुझे आएगा 2023 से 2024 का सही दिए स्कीम इसको तो सर कुछ भी हमको नहीं दिया आप भी उधर भी होता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कौन है आप मालूम है हाँ अभी का सर ये एक बहुत सेवा बनती है नो आज हम सर अब थोड़ा क्या फोन किया उसका थोड़ा ये स्पेयर हो गया तो वो आलो में ट्रांसफर में तो एक बार तो भाई एक हो गया Finland present PIO absent for the third consecutive time without meeting the result. The PIO was despite notice issued on 12 December 2024 to be present on 27 to PIO 2. And again, someone's being issued to the PIO on 29 April 2023 to be present today. The PIO is extended for the third consecutive time. And next, third appellant. The appellant states that he had contacted the PIO over phone today in the morning and inquired whether he is attending the hearing or not. To which the PIO cum executive engineer PWD Sangram Division, Urung Pume District, told him that his father had expired, and so he is here at Basa in Lepanama district to attend
grass rights, grass rights of its brother. Next, the equivalent stated that he has not been he has not been provided with information by the PI given law. During the agreement, the Commission hereby orders one to issue available parental factors against to contributing engineer. So PWD Pasar division, Asangam division, during Pune district to secure his attendance to the next date of hearing, which is fixed on date coming the fourth November 2010. Next, the officer in charge. Police station Sangram में है ध्यान रखना। Police officer in charge and police station Sangram to execute the available warrant for and to return from the data the PM document with present regulated during training that will be but yeah. But can take it exactly. Yes, I go to 5 years there we can fourth November. Fourth November curriculum. Next, the 317 2025. My Natun and others. Something versus the minus one. Oh, my. Find the big bolon. Seriously, getting thoughts sometimes. For piece of self. Sri Mayanatun Amiru Dada Jilu Jilee Simon Niji. But they came to the commission on 24 July 2002. Yeah, 18 July. They received information completely from the PIO, and therefore the field being disposed. Yeah, 25 or 2025.
Parliament knew that safety, PLC, and progress. Oh, that's scary. कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया अभी तक सर एक्चुअली गाँव तो हम छुट्टी में मैं गाँव का मेरे गाँव है एक्चुअली ना और मेरी नेम भी प्राइवेट थी मेरे परिवार का नेम है और हम दूसरा से बहुत मतलब ये दिया मेरे सर और मेरे ब्रदर दिखते से उसको भाई भैया लोग थोड़ा सा हमको थोड़ा हाईवे में एक्चुअली और थोड़ा सा काम करने तो दिया था काम तो राजा से बस कर दिया था बिल बना अचानक मेरे जमीन की चिमनी का प्रोसेस शुरू हो गया था मेरे गाँव तब मैं करते करते वो अरेस्ट कितने वो तो ना अरेस्ट करने वाला सुन मैं टैक्स सुन करके 2016 में तो 16 आज तक तो वहाँ में को उन्होंने वो बदल दिया है और कुछ इंटरेक्शन दिखे मेरा बहुत 16 में पकड़ दिया है और 17 जेल एशियन पकड़ दिया है तो लड़की को इसमें इसमें दिया है उसमें मार्च 2021 में किया है कि कोई भी मतलब उसको और दोबारा मत करो बोल के वो कॉमिट दिया है वैसे करके मैं देख रहा था लेकिन आप तो ऐसे में इसने मेरे वो भाई दिख रहा था मैंने हम पूरा हेल्थ दिख रहे थे आज कल रात मैंने खाया पीछे हो गया और सुबह आके पिचिंग करके बोल चला गया बोला तो कैसे होगा वो घर पे तो मुझे आके देखा तो सच में चोर था क्या पिचिंग किया है तो कहाँ से लिया बोल का गाँव है घर पर है ना वहां से कनेक्शन करके आया है मैं ठीक है तो ठीक है तो हम सोचे कि ठीक है जनता का जिला बना के लेकर अच्छा बात है तुम ना तो ठीक है तो कौन वोट कर रहा वो जब में मैंने ये एक 2 महीना का बाद में थोड़ा सा मैं थिंकिंग ऑर्डर दिया उसकी एक्टिविटी मत करो वोट करके ना तो यू क्यों किया बक्सा वहाँ में किया है तो मैं इस पास में है एग्जिट का पास में किया है हुआ है कि हम लोग नॉलेज नहीं कि गलती हो गया बोला तो हम स्कीम को दे दो वोट करके ना ओपन स्कीम के लिए 60 मैक्स किया है ठीक है ये रुकना है तो मनोरम कोर्ट बताया था कोर्ट ऐसे तो नहीं करना है तो कोर्ट तो पाँच बार भी नहीं चाहिए कोर्ट बोला कि तो आरटीआई करो ना जीते उसको ना ठीक है आरटीआई कर अगस्त में इन पर पुलिस को अगस्त में किया है लेकिन सबका नहीं है उसका मतलब कहीं में आओ को जी तरह में होना कहीं में आओ कहीं में बच्चे के नहीं है क्लास में एग्जीक्यूटिव किया है दार दिनों को देखो मैं और किन्ने किया है तो आप जो बात आप जैसे दे लो ठीक है चलो देखते हुआ नहीं फिर ऐसे क्लास में तीन चार किया है तो क्लास में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया है कि आपको ऑर्डर मिल गया ना ये आपको मैंने एक टेक्नोलॉजी हमको दिया था हमें मिल गया बोलते तो मीटिंग कुछ चाहिए नहीं है तो ये चेक करें यहाँ मेरे को क्या बोलता ये घूमती बोलते हैं क्योंकि एक घूमते घर पे भाई बोला नहीं वहां चला गया वो कहते हैं आज तो आज सुन एक घर में तो ना हम तो पता है मानी वो लगता है एक दो मैंने कहाँ से तीन चार तो होगा माना कहता है माना मैं क्या सुबह में से चला गया बोलता चला गया बोलता है तो फिर कभी मैंने बाहर की करेगा फिर सोचते सोचते मैंने कि हम ऐसे ऐसे डिवीजन में किया है डिवीजन में तो रिसीव मिल गया तो डिवीजन में किया है तो ऑफिस पता ही नहीं उसको तो बाद में उसके असिस्टेंट को पूछा तो कॉपी मिल गया बोलो कब देख रहा हूँ सोचते गए सोचते छोड़ पड़ते गया वो हो रहा है कि सर के पास वो ये ताना देते हैं करके टेबल में रखा बोलते कोई इनिशिएटिव कोई फाइल कोई टीका या आपको हेयरिंग करने के लिए या कुछ इनिशिएट करने के लिए कुछ बोला नहीं बोला है तो क्या करेगा ना तो ऑप्शन नहीं है मैंने तो इसमें बेस करेगा कि जो ये भी देखने से तो इसलिए एफएटी वो में चला कि आपको इनिशिएटिव नहीं किया है तो साहब को ऑप्शन नहीं दिखा आज में आपका पास सही आएगा ना तो मुझे चाची को आपको मुझे पिताजी होता है तो फिर किसके पास जाएगा लास्ट में सलाह लेने के लिए आपको सिर्फ उधर देना है कि ये इसका अपने चला गया ना अपने अपने चला गया होगा तो ना कोई कुछ इसे तो नहीं किया उधर देता है सिस्टम में एक्सेप्ट देता है तो हमको तो जितने चाहिए तो ना फिर तो दिए तो ना तो कुछ इन्फेक्शन नहीं किया कुछ भी नहीं किया सिर्फ फाइट किया
अब कनेक्शन रखा है, कुछ नहीं किया ही नहीं, मतलब क्या किया, कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो रात में फिटिंग किया बोला है, वो हाईवे से मैंने उन्हीं साइड में वो स्कीम है, तो वहाँ पे स्कीम है, वहाँ से कनेक्शन किया बोला है मैंने। वहाँ से मेरे 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो वहाँ में 60 सिर्फ वो पाइप भी चुपके देखा, तो वहाँ में पाइप जो है ज्यादा नहीं है, मतलब ये जो बोला तो 25 बोला 72 है, और काफी तो बोला 55 है, और बराबर है, जैसे इमेज है तो इमेज का तो ज्यादा नहीं, 50 तो ऑन एंड 3 7 वहां से कनेक्शन तो ना, तो उससे तो 65 तो ऑन पाइप तो किससे चाहिए तो ना, तो इसलिए वो तो मैं चाहिए था मैंने, मैंने कुछ वहाँ में ये मेरे हादसों के जनपद क्या सकेगा तो फ्यूचर में वो मिल के एक अलग अलग सेंचुरी दिया है, अलग अलग मैंने ये घूमने इंडिया का इंफॉर्मेशन का विषय मैंने प्रोजेक्ट बनाया, हम लोग मेरे हादसों का घूमने इंडिया का बना सेंचुरी बन गया, गाँव अलग है, प्रोजेक्ट अलग है, हर साल अलग है, उनका मेल कितना है, फीमेल कितना, वो डिटेल रिपोर्ट जो है ये सिंस 1972 में कॉम्पेरिजन करने बोला, आज तक है मैंने लोग स्कूल में मैंने, तो वहां से मैंने आज हम फैमिली इतना देता है, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं है मैंने, कम से कम कोर्ट ऑर्डर मानना चाहिए तो ना, तो बोला हमको कंफ्यूज ही नहीं किया, ये नहीं किया, लेकिन औसत जनता वहां में कोर्ट नहीं चल रहा था ना, और इतना सा 2 years ये चल रहा है मैंने, लास्ट ये साल में इधर आ रहा है मैंने, कितना लोग बहुत जनता है, लोग के से अलग बात है, सो हमको ओपोनेंट किया है ना, कौन किया बोला, बोलो तो मैं तो जे तो मैंने के मुताबिक से मैंने जो आपको केस किया वो उनका काम किया बोलता है, और पब्लिक मेरे गांव का जो पब्लिक बोला है जो हम लोग को केस करने बोला, वो उन्हीं को रात में कितनी भी चला गया बोला है, तो इससे कृष्ण में कुछ केस बोला है, समझ गया है, लेकिन मानता नहीं है, तो क्या करेगा ना, वहां ये कुछ करके कर नहीं पाया, तो हम एक्चुअली भी दिया, कुछ निश्चित नहीं किया, तो नहीं जाएगा सर, आप इस सब के पास गया है? हाँ, ऐसे वो तो ऑनलाइन तो किया है, कोई हमने फाइल है, कुछ दिखा नहीं, मतलब जो सिस्टम जो हुआ है तो ना, कुछ नियम ऐसे के पास में है, तो इतना उम्र में बोले इतना, तो फिर से समझते दिया है नहीं है, फिर कहाँ में इतना उम्र वो असिस्टेंट था क्या ना, वो ताना ताना नहीं, फिर मैंने हमको फाइल तो कुछ निश्चित हम क्या करेगा, तो ऑप्शन ही आपका पास आना पड़ा सब ना, तो उन्होंने को क्लियर हुआ में तैसे सुन कुछ भी मत करो बोला है, लेकिन किया तो अच्छा है, जनता के लिए किया तो अच्छा बात है, मेरे लिए बात नहीं कर रहा है तो ना, सरकार के लिए अच्छा किया, तो 60 लाख करेगा तो मैं नहीं करेगा, तो 60 में नहीं है, और आपका फिटिंग किया बोला है, तो रात में कैसे हो सकता है सर वहां में ना, इसको अगर आपको फोन को में आना पड़ रहा है, आपको मुझे जस्टिस दे, मुझे लगे और तो फोन में हम लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बुलाएगा, अच्छा उसका सामने में हाँ इधर होगा, वो उधर होगा, एसपी को भी बुलाएगा, हाँ ये एसपी के पास में आप जब अपील फाइल किया तो एसपी तो ऐसे हियरिंग नहीं लिया ना, यार आपको नियम से तो आपको और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बुला के एसपी हियरिंग लेना है। लेकिन सर ऑफिस में किया, एक्चुअली में था बोला, अभी जब ये डिवीजन था ना, आपको एक नोटिस देगा हाँ कि इस उस दिन को ठीक से आप ऑफिस आओ, एक्शन ऑफिस आओ, वहीं पर खुलेगा कुछ, हाँ, ऐसे करना चाहिए, जो वो कोई कोई ऐसे लोग नहीं करता, इसलिए ये लोग को बुला के समझाना पड़ता है, हाँ, अभी पता ये ऊपर किया था, वो पहले से शिक्षा के साथ किया था, बताया था एक आदमी जो कुल में ना, लेफ्टिनेंट प्रेजेंट जतिया एक्शन बताओ, whereas the PI was sent notice from the commission on 5th May 2025 to attend the first hearing today. The third appellant stated that he filed the first appeal
Section 19 plus 1 is the first appellate authority from the superintending engineer, Department of PHED and water supply, actually on 13 to 25. Despite the first appeal preferred against PIO, some executive engineer, PHEG and Raga Division, WS Raga Division, District Cabinet. The first appellate authority has not ordered to initiate hearing violating the procedure by Article 8, 2005. And that was building the above. The commission hereby orders and issue summons to the first appellate authority, some SE, PHE and WS, PHED and WS, actually, Kei Panio District, KEYI, Kei Panio District, will be present in person or through online or without pay on the next date of hearing, failing with the strict action as provided under Section 25, Plot 5 will be initiated again the superintendent engineer, HGD and WS. Actually, next, send someone to the PIO, some executive engineer, PHED and WS, Raga Division, Shamla District, to provide the information to the film and to attend the hearing fixed on the next without fail, failing with disciplinary action against the PIO will be initiated as part of provisions of RTI Act 2005. But the appellant, Sri Vijay Taram, to be present on the next date of hearing, dealing with this appeal will be determined and decided in her factor. Next date of hearing is fixed on 4th November 10:30. ये नवंबर 4 तारीख को 2:30 नवंबर 4 तारीख उस समय हम एक्शन को बुलाया है, एसपी को भी बुलाया है। हाँ 2:30 PM उस समय एसपी से भी सुन के देखता है
कि आपको क्यों सुनाई नहीं किया, हाँ सुनवाई करना है तो इसे भी सुनता है। हाँ होगा नेक्स्ट। अरे उसमें नोटिस तो हाँ देना है हाँ ना, अगर कैंडिडेट को भी नोटिस देना है तो नियम से तो ना। वो है ना? वो सब उस समय सुन रहे हैं जैसा ही के साथ। ये नवंबर पर ना। हाँ नवंबर 4 तारीख जॉर्जी थिंकिंग Don't 3:30 don't see India Janpan. Iran. came down good and become water. This okay okay. The PIO representative the Mali. He come is a PIO represented by Sri Tapi Mali. They come is with an authority. Excellent online है ना? Excellent online. Present है. ठीक नहीं. Sir, can we hear from you? I have got a lot of things that we thought for. Okay. Which, if you had been here, I would have only called. Yes. The API is prepared. All the documents have been brought to the court and had the document being present in person today. I would have handed the one the documents to the document. But as the documents are present online, or should be cannot with the time. वो मिला उसको बंद को तो कॉल करके लाउड स्पीकर में बैग लगा रहना हो जाएगा. लेकिन इसमें फर्स्ट के लिए प्रॉपर्टी का ऑर्डर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है. वेरिएंट फर्स्ट के लिए प्रॉपर्टी ना even this is the first hearing, but that matter to come to my court before it has to be heard by the first level of authority. No, who is the SP or the chief engineer? So here, usually, yes, from the हाँ हेलो. अच्छा ये आपका फाइलिंग वाला जितना डॉक्यूमेंट्स में फर्स्ट की अथॉरिटी का कोई ऑर्डर दिखाई नहीं दे रहा.
फिर भी तो आपको कोई नोटिस दिया होगा फर्स्ट एडेड अथॉरिटी से, तो वो नोटिस भी तो नहीं नहीं लगाया आपने। नहीं दिया हुआ यहाँ पे। फर्स्ट फर्स्ट एप्रिल आप दिया है ये को 26 फरवरी। आपने फाइल किया 29 नवंबर, हम लोग का 2 अप्रैल, 17 अप्रैल को। तो आपका वो एपीआई इधर आया है, उन्होंने बोल रहे कि जितना इंफॉर्मेशन आपने मांगा है, तो वो लाया है इधर कोर्ट में। आप लोग in person physically had you people been here in the court, he would have given it to you, handed it over to you. But as you are virtually present, he cannot. Therefore, हम एक ऑर्डर करेगा कि आप पीआईओ का ऑफिस में इन पर्सन आपके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का। तो the order to collect the information from the office of PIO in person. And to let the commission know that they have received the information that applies completely or not. And to ascertain the same, an exit of claiming the fixed at this time, 4th November 2025 to 3 p.m. So 4th November 2025 2:30 p.m. को ना आप हमको बताइए कि आपको इंफॉर्मेशन कंप्लीटली मिला कि नहीं मिला है। तो उससे पहले आप खुद पीआईओ के ऑफिस में जाएंगे। पीआईओ को हम आपको पोस्ट थ्रू भी पोस्ट करने नहीं देगा, इन पर्सन आप जाके रिसीव करो। पोस्ट का थ्रू जाने से भी हम लोग फिर बोलता है यहाँ से, तो पीआईओ का ऑफिस से जनरली क्या होता है, पीआईओ का ऑफिस से इंफॉर्मेशन पोस्ट करता है विद ऑल द रजिस्टर्ड पोस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, लेकिन एप्लीकेंट्स और एप्लीकेंट्स ये बोलते हैं कि हमको नहीं मिला है। तो इसलिए अभी आपको हम ऑर्डर करता है ये पोस्ट ऑफिस से नहीं भेजेगा, आप इन पर्सन जाके लेंगे। और मिला कंप्लीटली मिला ना कंप्लीटली नहीं मिला, वो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में बताइए। आपको कोई नोटिस नहीं भेजेगा यहाँ से नेक्स्ट डेट के लिए। क्या क्या कर मैं उसका तो हम फिर से हियरिंग करके यहाँ में हम लोग फाइनल किया है ना। आप आया था ना, फोन आया था, उसको फिर से हियरिंग कर दिया था। जी जी। आप लोग आप इसको देख लीजिएगा। यू हैव द वन इंफॉर्मेशन। हम लोग भी अननेसेसरीली बहुत सारा केस हो गई। So for again, they fixed it on 4th November. You don't need to come that time. You file a very okay, okay, yeah. You can come avail the online services, or at least we can call you up. Okay. Represent with a letter of thanks. But he is unable to attend the hearing today. The PIO represented by the PIO present and stated that he has brought all the documents to be
damage to the lung. That is the stress of the lung is sent to the repayment. And therefore, the commission elders that the applicants receive the information in person from the office of the PIO. And the PIO is ordered to provide the information to the victim, to the victim in person, rather than forcefully known of so, to ascertain the furnishing and receipt, furnishing and receipt of the information completely. The commission here it says the make of the area and of to that clear. So to that clear, very So you have to say Nabum Nanu versus DRDA of marriage. easy. DD. Ahum Nanu Apya. Here equivalent present. Or up मैं पीऊँ the सिगरेट here your present. में क्या इंफॉर्मेशन मांगा है PIO से एंटी होगा एनजी एनरेगा उसमें अब क्या मांगा है तो ये अप्लाई प्रोफाइल में था जो एंटी से को देख तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया PIO मेडल में मेडल आप इनको दिया है पुलिस वैसा था हमें तो बस बिजनेस नहीं है ना कोई तो हमारे पास अवेलेबल था तो जो मेरे साथ पकड़ रहे थे किसी को हाल में ये हमारे पास अवेलेबल थी सर तो कुछ कुछ हमारा वीडियो का पास अवेलेबल था इसलिए हमने ईओ को भी मांगा है सर उनसे अनलिमिट का देरी हो गया मीनवाइल वो मेरे पास अवेलेबल उन्होंने वो कर लिया हम उनको बोला ही था no, but as a PIO, you have to also see the form A of the applicant. The form A in nothing is clear as to what information he wants. अब तो कोई भी वो क्लियर नहीं है ना अब ये सीधा लिखा है furnishing the details of document sold the MG and Rega under DRDA Bahulpare AP then close in backside में क्या चीज का बोल पर हम लोग को तो इतना ओ आइडिया है मतलब हमें वो चीज तो यहाँ पे नहीं दिया है दिया था बाकी ओके ओके हाँ 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 ये वाला 2023 से 2024 एक साल का आपने मांगा है ना ठीक बालीजान ब्लॉक का बोरिंग ब्लॉक का दोइनुक ब्लॉक का किन्नी ब्लॉक का नींजा ब्लॉक का सागाली ब्लॉक का यस सर इससे तो ब्लॉक से कंप्लीट हो समय लग गया सर क्योंकि कुछ बड़ा तो फिर वहाँ नीचे में जो जगह से हम लेके आए सर ठीक है लेके आए वो सर
ब्लॉक से चलाने मिल रहा है। अभी तो मालूम होता होगा कि पीडी का ऑफिस जो स्कीम को ऑन द ग्राउंड टू इम्प्लीमेंट नहीं करता है, वीडियो वीडियो करता है ना, कंसर्न वीडियो अपना। पीडी में बी सी द ऑफिस ऑफ द पीडी में भी वो डीडीए का ही कोई ऑफिस होता होगा, रॉयल डिस्बर्समेंट का कुछ भी हो। ग्राउंड में आप जाके एग्जीबिट नहीं करते तो ग्राउंड में तो वीडियो करेगा। आप जल्दी इंफॉर्मेशन चाहने से आप हैव यू आस्क्ड इट फ्रॉम द वीडियो, आपको जल्दी मिलना चाहिए था, मिलना था इंफॉर्मेशन। लेकिन अब जब एक आदमी को एंटायर एक डिस्ट्रिक्ट का इंफॉर्मेशन और एंटायर सब ब्लॉक का इंफॉर्मेशन मांगता है, तो उस ऑफिस में थोड़ा डिले तो होगा ही आपके लिए। लेकिन उसको concern that very particular office, had you gone to that office, the office would have maybe given the information to you within 15 days, 10 days like that. मेरे पास आना भी नहीं चाहिए था होगा। तो नेक्स्ट टाइम ये सब भी आप लोग भी दिमाग में रखना है कि अभी पीडी now what how she can be giving you entire information of all the blocks to you within a month। हम लोग का ये तो you have to be provided within a month. But whatever information we have asked for and whatever information we could collect for you, आज यहाँ पे लाए हैं, इसको देख लीजिएगा, आप रिसीव कर लीजिएगा। You can receive from him also, they won't be report। हाँ, tomorrow again he can say कि I have not got it। तो ठीक है, वो आप ये बोल रही है कि बालीजान ब्लॉक का, बोरुम ब्लॉक का, डोइमो ब्लॉक का, किमिन ब्लॉक का, मेंगे ब्लॉक और सागाली का सब ब्लॉक का आया है। Both parties present, the PIO stated the information supplied had been brought to the court to be engaged with the appeal। ये भी सबसे पहले हम रिव्यू कर देते हैं। उसमें बस एक दिन के दिन का मतलब हम लोग वहाँ पे बोल चुका था, मेरे को भी बोले रिव्यू हो गया है, अब कल मैं आके लो, मैं सीईओ इन्फॉर्मेशन कमीशन करके उसका हम लोगों को हम लोग को बहुत अकेला है, सोचा अकेला है पर वो आदमी है हमारा तो साथ एक दो आप पांच फोन कर वही तो I can understand। वो डिटेल्स मांगो तो 168 आरटीआई मांगने वाला आता है। सर ये मेरी आपका अथॉरिटी भी है तो महीना जैसे 3 महीना जानी मतलब भी हियरिंग हुई थी वहाँ पे एक महीना वो भी सर बोल रहा वहाँ पे रोड शेड्यूल भी बहुत बड़ा था, सब कुछ भी करती है इसमें तीन इंसेंटिव मिल जाएगा। Yeah, I don't know। कोई बोलते हैं कि हम सोचेगा मेरा ये बॉक्स Yes, yes। कोई सोचते ही हम लोग को 25 में पहुंच के नहीं देता है। एक्चुअली सर ये केंद्र रिलेटेड है डिस्ट्रिक्ट और ये आप ये डायरेक्टर थिंग्स को ना हम लोग सिंप्लीफाई करके लाइफ को भी, टोटल आवर लाइफ ऑल्सो इफ वी कैन लिव इन ए वेरी सिंप्लीफाइड वे ना, आसान होता है। आरटीआई भी थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में मांगने से ठीक होता है। आपका ये 25 डिटेल्स आप मांग रहा है, बेचारा भरा उसमें डीआरडीए के पास एवरीवन नोस कि वो लोग के पास फंड भी नहीं होता है डीआरडीए में। तो एक दो स्टेप्स ही है जो भी जैसा now she is stating in the court before you that there are 160 applicants like you। 107 आदमी आपका जैसे अप्लाई कर रहा है, तो आपको आरटीआई प्रोवाइड करने में ही ये लोग का टाइम तो चला जाएगा। बट सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि ये जो दिया इजी को ले लीजिए, ये पीडी मैडम जो है अपना 70% टाइम को पब्लिक काम में यूज करना है, आरटीआई ये सब सप्लाई में यूज नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है, आप लोग जैसा बोला होबार से आरटीआई करने वाले लोग को देख के एक ऑर्डर भी दे दिया है जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने। नाउ सी आज दो स्टेप्स यहाँ में है, दिस इज द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्स ऑफ द गवर्नमेंट। आज ये दोनों आया है, आज वह पब्लिक कोई तो मिलने आया तभी होगा, तो आपके लिए यहाँ आया, फिर ये दोनों कल जाएगा वापस या आज जाएगा, तो एक दिन या 2 दिन का वो पब्लिक का रिसोर्स, सी इज द रिसोर्स ऑफ द पब्लिक। The officer, officer is a resource of the public। Her one day is wasted here, just like that, because of 160 people like you, those who are wanting information just unnecessary। अब इतना information देके क्या करेगा? सर हमारा वाला है हम Sir,
ये इसलिए सप्लाई वाला को एक्चुअली हम एक साथ बेनिफिशियरी There are so many things in life to do. हम लोग का आप खराब मत पाइए. It's just not on the record. हम लोग का आदि आपका लड़का लोग एज का जैसे आज तक भी सिर्फ दो ही आदमी एक्सीलेंट आया आदि क्यों बोलने से वो लोग खेती जाता है जो गार्डन में जाता है मिथुन ढूंढने जाता है जो जो नौकरी नहीं करता है जो ठेकेदारी भी नहीं करता है तो दे आर wanting to do something for themselves instead of roaming around offices and finding all these unnecessary things and harassing the officers. ये हम लोग का ही ज्यादा आता है यार मेरा पास में 416 केसेस है 416 केसेस में सिर्फ 10 ही नॉन वो नीति बाकी सब आप लोग का ही है ऐसा नहीं करके आपका यूथ एज को आप वर्क्स में जहां से आप बाद में हम लोग का जैसे एज में आके आराम से फल पा सकेगा ऐसा कुछ कंस्ट्रक्टिव वे में आप अपना टाइम देता है ये जस्ट एन एडवाइस फ्रॉम ए फादर हम आपका पिताजी स्वरूप है तो ये सब तो आप देख लीजिएगा सब लाया मैडम आज देखिए आप कर लीजिए कंप्लीट है कि नहीं बट द रूल सेज दैट वी हैव टू बी certain I am never concerned about the satisfaction of the freelance. I am only concerned about the complete receipt of the document or no. बाकी लोग बोलते हैं satisfied नहीं. I'm not here to see the satisfaction of anyone. I am only here to see that complete information are given or are आप complete information दिया है कि नहीं दिया है आप हमको next date of ये में बताइए hearing में. कुछ समय मैडम नहीं आएगी she will send someone on her behalf or वो online आएगी. You don't need to come and that in person. Either you can send someone who would be knowing about all these things with the authority letter, or else you can appeal online. We have to think about the resource of the government, public का resource की हम लोग सोचना पड़ता है. So certain serious litigants that we also feel for. यही डेली बोलता है कोर्ट में लिमिट को एडवाइस करता है होगा आप रिसीव कर दीजिए फिलहाल रिसीव डॉक्यूमेंट्स कमेंटेड या that of is that and to ascertain the complete information is given or not. The next one is take which is on 4th November 2025 2:30 p.m. 4th November 2025 2:30 p.m. तो आप आपके हमको बताइए कि इंफॉर्मेशन मिला है कंप्लीटली या नहीं और अगर नहीं आएगा तो हम उस दिन डिस्पोज कर देगा केस पे वो भी लिख दो the current page will contain the mixture that will appear with the heard and determine expert. Because it signing